the patriot say? Thinking is the capital, enterprise is the way. Hard work is the solution, and then you achieve your dreams one day. The dreams come true when the true national hero, Shri APJ Abdul Kalam, in his these words describes the strength of self-realization. Born on 15th October 1931 at Rameshwar, this man never feared of any failures, trials and tribulations. His friend, his uncle, has always been there for him. He used to sell newspapers with his brother to help him. His father, Zainulabdin, owned a boat and his mother, Asiyamma, was a housewife. Being the youngest among his 5 siblings, he was given a lot of love and affection. Seeing his desires in studies, his parents sent him to SH Secondary School Ramanathpuram and later to St. Joseph's College, Tiruchirappalli. His mother sold her 2 gold bangles to support his college studies. So finally, he graduated in physics in 1954. है ये 1931 15 अक्टूबर की बात। छोटे खुदा ने नवाजा भारत माँ को उसके फरिश्ते से लिया जन्म उसने मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में छोटे से गांव में विस्तार में बताऊं देखो। नाम उनका अबुल बकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। नाम सुन के सीधा 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 सोच चला। रामेश्वरम गाँव का वो लड़का देखो खास था, चेहरे पे अलग सा नूर, आंखों में विश्वास था, एहसास था कि किसको बदलने वाला इतिहास था। अनजान था वो रास्तों में आने वाले तूफानों से, हालातों से डरा ना वो लड़ा वो बन के शेर। काफी देर छाए देखो गरीबी के बादल थे, पर काबिल थे उनके पर लेने को ऊंची उड़ान। खुदा का परिंदा जिसने ना से छुआ आसमान बल्कि नाप लिया था ये पूरा ब्रह्मांड। न तो कलाम बन बन इस देश की आवाज बन, देश की आवाज बनना तो कलाम बन बन। न कभी बुझे वो मशाल बन, बुझे वो मशाल बन, बनना तो कलाम बन बन। इस देश की आवाज़ बन, देश की आवाज़ बनना तो कलाम बन बन। न कभी बुझे वो मशाल बन, बुझे वो मशाल। Shri APJ Abdul Kalam turned to be an illustrious scientist and aerospace engineer from Madras University. It will be true to say Mr. Kalam was a man of impeccable character, profound knowledge and firm conviction. In 1958, he joined Aeronautical Establishment Development for Defense Research and Development Organization. For 3 years, he worked as an association head to the organization. Though he started designing small hovercraft, he was unconvinced with the job. In his first stage of career, he got an opportunity of meeting 3 eminent personalities, Dr. Vikram Sarabhai, Professor Satish Dhawan and Dr. Brahma Prakash. Working under renowned scientist Vikram Sarabhai, he was transferred to Indian Space Research Organization in 1969. Here at ISRO, he got an opportunity to work as project director for India's first satellite launch, PSLV-3. The PSLV-3 successfully deployed Rohini satellite in near Earth orbit in July 1980. His visit to NASA Research Center, Goddard Space Flight Center, encouraged him to bring a new change at the expendable rocket project at DRDO. In 1969, Mr. Kalam received government approval to expand his program on Launchpad. Between 1970 and 1990, Kalam made an effort to develop Polar Satellite Launch Vehicle and PSLV-3 project. हाँ, 1.5 साल की उम्र में बेचा अखबार ताकि भर सके वो अपने स्कूल की फीस को। किसी भी चीज़ को दिल से अगर चाहो तो कायनात में ला देती उम्मीदों की ताकत, चट्टानें हिला देती जुनूनों रगों में तो रब से मिला देती। हाँ, ये सच है कि ज़िंदगी में मिलेगी सिर्फ खुशियाँ, ना खुदा ने ये वादा किया जो भी किया उसने अपने संघर्ष से। 15 साल का लड़का दूर अपने घर से, कुछ करने की जोश में, शिक्षा की खोज में। पर दाखिला लेने के लिए अम्मा के पास पैसे ना थे पर पास था उनके मन में यकीन। उन्होंने सोने के कंगन तक गिरवी रख डाले, उस नन्हे से पंछी को पर लगा डाले। फिर आगे जो हुआ छोटे सब इतिहास है। बनना तो कलाम बन बन, इस देश की आवाज़ बन, देश की आवाज़ बन, बनना तो कलाम बन बन।
न कभी बुझे वो मशाल बन, बुझे वो मशाल बन, बनना तो कलाम बन, बन इस देश की आवाज बन, देश की आवाज बन, बनना तो कलाम बन, बन न कभी बुझे वो मशाल बन. Successful completion of PSLV and SLV 3 project, Dr. Kalam directed two other successful project programs, Project Devil and Project Valiant, which sought to develop ballistic missiles from the technology of SLV program. Yes, Project Devil was an early liquid fuel missile, whereas Project Valiant aimed at development of intercontinental ballistic missile, but they proved to be unsuccessful. Later in 1980, Government of India initiated an advanced missile program under his directorship. Dr. Kalam with Sri R. Venkatraman, Dr. V.S. Arunachalam, Associate, started the mission IGMDP, Integrated Guided Missile Development Program. Mr. Kalam, as Chief Executive, played a major role in developing many missiles under the mission. Under IGMDP program only, Missile Agni and Missile Prithvi were developed, which proved to be a great gift to India by him. And it was the development of these ballistic missiles he was given the pseudonym the Missile Man of India. Later playing his role in upcoming more such programs, Sri Kalam once said, "Don't be scared of failure because success always starts with zero." After these achievements, he also played an important role in Pokhran 2 in 1998, India's first successful nuclear test. He supported the team and played an intensive political and technological role in the mission. संभव की बेड़ी तोड़, ज्ञान की वो पेटी खोल, बन चुके थे अब एरोस्पेस इंजीनियर. उनका एम था क्लियर, पहुंचाना भारत देश को शिखर पे, मिशन पे खिलाना दुनिया में शांति और क्रांति लाएंगे सारे युवा, उनकी आशा है. भारत देश और इसरो का बनाया एक साँचा है, न्यूक्लियर टेस्टिंग के सपने को सकारा है. बनना तो कलाम बन, बन इस देश की आवाज बन, देश की आवाज बन, बनना तो कलाम बन, बन न कभी बुझे वो मसाल बन, बुझे वो मसाल बन, बनना तो कलाम बन इस देश की आवाज बन, देश की आवाज बन, बनना तो कलाम बन न बुझे वो मसाल बन. Kalam served as a chief scientific advisor to the Prime Minister and Secretary of the DRDO from July 1992 to December 1999. With one of his colleagues, Soma Raju, he developed two gazettes. These were low-cost coronary stents and a rugged tablet computer for healthcare in rural areas. His journey as a scientist took him to a new path of laurel and applaud. Shri Kalam started serving as the 11th President of India in 2002. It was a moment of great honor and he received the highest civilian honor, Bharat Ratna, in 1997. In fact, a truth, he was the first scientist and the first bachelor to occupy Rashtrapati Bhavan. During his tenure as president, he was affectionately known as People's President. He brought many new amendments in the role of president. He also supported Uniform Civil Code in September 2003. At the end of his tenure on 20 June 2007, Kalam was offered another tenure, but he himself denied the contest and left the president office with great After leaving office, Kalam became a visiting professor at management institutes of Shillong, Ahmedabad, Indore, and many other research and academic institutions. For his unparalleled contribution, Shri Kalam was awarded with India's great civilian honor, Padma Bhushan in 1981, Padma Vibhushan in 1990, and Bharat Ratna in 1997. भारत के राष्ट्रपति बनने का इरादा है, रखेंगे तिरंगे का सर ऊंचा हमेशा, ये वादा है, हाँ ये वादा है. हाँ, खुद पे भरोसा करना सीखा हमने आपसे ही, कदमों को करके सब तक भिड़ना है तूफान से भी. चलेंगे सीना ताने चाहे रोके दुनिया, करेंगे काम ऐसा कि मानेगी ये दुनिया, जानेगी ये दुनिया की सोच में क्या ताकत है. कलाम के बंदे हम तो फुल टू आफत, पाना है लक्ष्य को बस यही इबादत है, सफलता है मिलनी अब मेहनत तो आदत है. ना तो कलाम बन इस देश की आवाज बन, देश की आवाज बन, ना तो कलाम बन न कभी बुझे वो मशाल बन, बुझे वो मशाल बना तो कलाम बन इस देश की आवाज बन, देश की आवाज बना तो कलाम बन न कभी बुझे वो मशाल बन.
The journey of this Indian hero saw a deadly twist on 29 July 2015 while giving a lecture on creating a livable planet Earth at the Indian Institute of Management, Shillong. He felt discomfort. Around 6:35 p.m., only 5 minutes into his lecture, he collapsed. He was rushed to hospital where he was announced dead of a sudden cardiac arrest. Following his death, Kalam's body was airlifted in IF helicopter from Shillong to Guwahati. On 28 July, his body was brought to Delhi in Air Force C-130J Hercules. All dignitaries of Indian authority gave their last adieu to this national hero with a heavy heart. On 29 July, Kalam's body was taken to Madurai, wrapped in the Indian flag. Reaching Rameshwaram on 30 July 2015, the former president was laid to rest at Rameshwaram's P. Karumbu ground with full honor. India reacted to Kalam's death with an outpouring of grief. The Indian government expressed their gratitude by releasing an Indian stamp on his name in 2015. Not only India, the world around expressed their deep condolence to the legendary patriot. Nothing can be compared with his inspiring work that he has garnered during and after his presidency. समय की रेखा पर जहाँ रेत की बादशाहत बसती है, उसी सूखे रेत पर उन्होंने अपने पैरों के निशान छोड़े हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कायनात में वे रहें या ना रहें, पर उनकी मेहनत के रंग हर नज़र में दिखते हैं। आज उनके जन्मदिन पर चंद लफ्ज़ों की एक पंखुड़ियाँ, एक धन्यवाद उस एहसास के लिए जो उन्होंने हम युवाओं में जगाया है। APJ Abdul Kalam, one of the greatest sons of our land. He was an admirable combination of scientist, politician as well as poet. He wrote many eminent poems and I am going to recite one of them titled Soaring Dreams. Fabulous air show of Paris in motion, my thought too in flight and yearns for my nation. When will the planes designed in my land pierce the sky as lightning in action and gracefully land as angels in full boom? All is envy of the spellbound spectators. Yes, we can. Yes, we can. When we are united in action and addicted to deeds, sky can't be limit for my nation in action. Sky can't be limit for my nation in action. श्वेत हरित कौसुंभ पुकारे कलाम कलाम सलाम सलाम हर्षित जन गण गर्वित मन कलाम कलाम सलाम सलाम कलाम कलाम सलाम सलाम कलाम कलाम सलाम सलाम श्वेत हरित कौसुंभ पुकारे कलाम कलाम सलाम सलाम हर्षित जन गण गर्वित मन कलाम कलाम सलाम सलाम देश नमन तुझे करता क्षण क्षण कलाम कलाम सलाम सलाम है नतमस्तक सागर संगम कलाम कलाम सलाम सलाम कलाम कलाम सलाम सलाम जब दमकेगा तब आदम इंसान होगा जिस घर में इंसान बसते हो वो घर जग रोशन होगा दिल से दिल तक राह बना ले घर तीर्थ मंदिर होगा आँख तेरी जब आंसू उसके तब ये सफल जीवन होगा दीन इलाही
देखा गांधी न देखा, देखा तुझे सब कुछ देखा। तू जमीन पर शांति दूत है, दिगंत का भी ज्ञाता। तू अंतरिक्ष की लेता उड़ाने और हृदय में उतर जाता। जहाँ गया वहाँ भूमि पावन, तेरा निशान न मिट पाता। अंतरिक्ष पर हस्ताक्षर कर इस माटी का मान बढ़ा। कौसुंभ पुकारे कलाम कलाम सलाम सलाम। हर्षित जन गण गर्वित मन, कलाम कलाम सलाम सलाम। देश नमन तुझे करता क्षण क्षण, कलाम कलाम सलाम सलाम। है नतमस्तक सागर संगम, कलाम कलाम सलाम सलाम। कलाम कलाम कहते थे मैं एक गहरा कुआं हूँ इस ज़मीन पर। बेशुमार लड़के लड़कियाँ उसी तरह प्यास बुझाते हैं जिस प्रकार खुदा की रहमत से जर्रे जर्रे की प्यास बुझती है। उनके यह शब्द हम युवाओं की जज्बात हैं और इसलिए हम उनको नमन करते हैं। He was soldier who stood against corruption. He said 600 million youth are the strength of the country. He gave an identity to Indian research and technology. He said, my story will end with me, but my version of life will always live in the eyes of every youth. With his own simple life, he taught to live luxuries with love, devotion, learning, perseverance and prayer for the country. We take a promise as a youth that we will show compassion and love to our parents, teachers and above all our motherland. Sri Kalam had deep love for children. As an educator, wherever he visited, he only had 4 things to share. And today, on this special occasion, we, the students of the Aditya Birla Public School, take this promise that we will follow his 4 mantras of success. First, we will always aim great. Second, we will always work hard. Third, we will always try to continuously acquire knowledge. And fourth, we will persevere and succeed. Dear sir, we will always follow these mantras of your success. Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate.